what's the most interesting thing about this movement called as Proud Randi, which was recently ventured across by this very popular psychologist online. Her name is Dvija Bhasin and her name online is Awkward Goat. उन्होंने चालू किया था एक Proud Dundee movement, which was originally, as she thinks, or rather what she intended to be a moment wherein individuals, especially women who are constantly in this India, of course it's the new India, it's very unfortunate कि आज तक हमारे देश में औरतों को simply for transgressing the traditionalist laws, जो कि most of the times ladies की agency over their lives, their bodies को जो violate करते हैं, जब वो औरतें खुद उन rules को जो कि खुद self violatory हैं उनको transgress कर देते हैं, तो जो mostly patriarchal सोच के जो आपके लोग हैं वो आपको रंडी या प्रोस्टिट्यूट का नाम दे देता है, बिकॉज फॉर देम एनी टाइम यू ट्रांसग्रेस द बाउंड्री ऑफ द ट्रेडिशन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एट योर योनी, it is at your sexuality, that maybe you also transgress the laws of sex, because you might know that how the body politics works. The whole of the society is extremely anxious about how the women's body needs to be controlled, kept, and this is why we have so many institutions like marriage. We have institutions like मतलब marriage है, adoption है, because eventually women are the ones who would be requiring or who would be supplying the future labor supply. तो उसके अराउंड पूरी पॉलिटिक्स चलती है, और वहीं पे जहाँ पर भी वो देखते हैं कि आपने थोड़ा सा भी लॉज को ट्रांसग्रेस किया तो आपको रंडी बोल दिया जाता है. एंड वी अंडरस्टैंड वाई शी सेड सो, बट यू नो वॉट, यू मस्ट रियलाइज़ कि सारे मूवमेंट्स ऑनलाइन ही चलते हैं, और जो लोग अगर ऑनलाइन नहीं कनेक्टेड है तो उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ. ध्वजा बसिन ने, जहाँ पर उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जस्ट लाइक एनी नैरेटिव ऑनलाइन, any narrative online makes two kinds of groups, out groups and the in group. The in group, the one who gets it emotionally, the out group who gets it emotionally plus intellectually. Now the out group today, who are women or men who come from a background, who understand how casteism works, who understand the sociological roots of the word called as randi, जो समझते हैं कि जो actual में जो sex workers हैं वो कितना परेशान है अपनी इस प्रोफेशन से, वर्सेस द ग्रुप जो कि इमोशनली इससे कनेक्ट हो रहे हैं. तो इससे एक बॉटम लाइन ये निकलती है कि चाहे आप कितना भी अच्छा कैंपेन कर लें ऑनलाइन, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप अपने इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स के लिए परफेक्टली कोई डिस्क्लेमर ना दें, जैसे कि ध्वजा बसिन ने दिया, then this is what it happens. It creates ruckus, because now there's going to be constant tussle between the in group and the out group. And that will lead to the death of the narrative, the death of the whole movement, which to begin with started with the idea of females' reclamation of the identity. So I think it all boils down to her very poor articulation. I wish she was more careful about it.